हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर। वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड है एबोमिनेट। ये एक वर्ब है। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एबोमिनेटेड। थर्ड फॉर्म भी एबोमिनेटेड। एबोमिनेट, एबोमिनेटेड, एबोमिनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका मीनिंग क्या होगा? टू हेट समथिंग और समबॉडी। किसी चीज से नफरत करना और किसी से नफरत करना। ठीक है, नफरत करना हो सकता है और घृणा करना भी हो सकता है। नाउ वी विल सी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या है? वर्ड्स आर डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। लेट्स सी। नंबर 1 हेट, नंबर 2 डिटेस्ट, नंबर 3 लोथ, नंबर 4 लुक डाउन ऑन, etc. Now we will see how to apply this word in a sentence. Let's see. Your number 1 example, don't abominate the poor. गरीबों से नफरत मत करो। Don't abominate the poor. Number 2 example, Rohan used to abominate his friend's behavior. Rohan used to abominate his friend's behavior. रोहन अपने दोस्तों के व्यवहार से नफरत करता था। ओके, सो एबोमिनेट का मीनिंग क्या है? नफरत करना और घृणा करना किसी चीज से और किसी से। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ grammatical rules, we have uploaded so many videos on grammatical rules. You can check our playlist or you can check the description box also. I'll give the link of those videos in description box. Okay, you can watch all the videos from there. If you like this video, do subscribe to our channel to get more videos like this. Thank you. Thanks for watching.